This is the FM Gold channel of All India Radio. In the program News Analysis, now we bring you a dialogue on better performance of agriculture and allied activities in GDP. The participants are Professor J.D. Agarwal, economist, and Harbir Singh, economic journalist. Government has issued first advance estimate of the gross domestic product, and as per the data issued by Central Statistical Organization, the GDP will grow at the rate of 8.6%. The major factor for this higher growth is coming from the agriculture sector, which is supposed to grow at the rate of 5.4%. Comparable last year's growth as just 0.4%. And other sector also fared well. Service sector has grown a double digit. Industry manufacturing is around 8.8%. So we have to discuss all these, and mainly in the context of agriculture and allied. Earlier in the last few years, we were seeing that agriculture was not performing well. But this year, agriculture growth is a very good addition into the GDP. How do you see, Dr. Agarwal, to this point? If you really look at these advanced estimates, we find that they are quite appreciable, because the expected growth rate of about 8.6% as an advanced estimate is an appreciable, and it shows that the economy is becoming resilient. Because there were some estimates by Reserve Bank of India and also the Prime Minister's Economic Advisory Council, which were indicating that the GDP might grow anywhere between 8 to 8.25% or maximum 8.5%, 8 to 8.5%. Now, 8.6% is one of the very appreciable thing. But as Finance Minister already said, that it is as per the expectation, and we are satisfied with this growth, because he was continuously saying that GDP will grow between 8.5, above 8.5, and it has come little about 8.5, 8.6%, despite the higher rate of inflation, which was supposed to be a deterrent to this thing. There are two factors which were making us complacent and apprehensive about 8.6% or 8.5 and above. One factor was that the growth rate of industry infrastructure during the quarter from October, November, December was not quite satisfactory. The second factor was that the inflation rate has been very high, almost the whole year, April to December or January. Food inflation rising to 17.4%, and inflation rate is also very high. Now that also cuts down on your growth rates. And because of these two factors, in my opinion, we were probably apprehensive that we may not be able to achieve a high growth rate. But if we are having an advanced estimate of this type, and of course, there were even estimates that agriculture might grow at about 6% or so. If that was to be so, then our growth rate of GDP were even higher. And as Finance Minister says, more according to what our expectations were, as a matter of fact. But we are happy that the agriculture has grown at the rate of about 5.4%, which is again very good from 0.4% in particular. Because last year, there were too many disasters and agriculture really suffered very badly. And as a result, bad monsoon was also the incomes of the farmers were affected badly. It's not only a question of its contribution to the growth rate, but it is also a question of affecting the quality of life of majority of people, say something around 60 to 65% people who directly involved in agriculture. But even in agriculture, the growth has come from the products like sugarcane, very good growth, cotton almost double. Then we have the growth in oilseed and fruit and vegetable also. Food grain is okay. There is a growth into food grain production also, and because last year we had this monsoon almost failure, and Kharif suffered badly last time, and this time Kharif is good. These contributions are there for the higher growth of agriculture, and low base of agriculture is also one of the factors for this higher growth. So, do you think that the better growth from agriculture will have a direct impact on the inflation? General inflation is still more than 8% the December data, and food inflation around 17% as on the latest data of around, I think, January 22nd. As a matter of fact, if we really look at the statement of the Prime Minister just about 2 days back, when he was addressing the Chief Secretaries, he has indicated that partly it is the growth in incomes of the people which is responsible for inflation, and secondly, on the supply side. But if agriculture has grown at the rate of about 5.4%, that means it is not the bottlenecks in supply, but something else. The second aspect is, as far as income level is concerned,
To some extent, it would certainly affect as the incomes grow. But at the same time, there is an income effect, which indicates that as the incomes of the people grow, the demand for inferior goods, which is called necessities, goes down. Now, that indicates it should not affect to that extent. That means there is something else which is responsible for the current rate of inflation, both for food prices as well as for the general inflation. Now, we need to really look for those kind of factors. At the same time, this also indicates that the way the growth has taken place in agriculture, in concentrating in certain given products, agricultural products, it indicates that there is a shift of production from food grains to commercial products. Cash crops. Yeah. Which indicates that the farmers are now aware as to where would they get more money or more profits. And they are not being guided more by procurement prices or by what are the necessities. There is no such planned kind of system where so many hectares must grow, food grains or rice or so on and so forth. This is the price factor which makes the difference between the one crop to another crop, because farmers look their income coming from a particular crop. Definitely, if there is a higher income from another crop, he has to sift and he has the freedom to do that. So it means that this kind of growth which is coming from agriculture will slightly make a balance. Even the share of agriculture in GDP will go this time upside. There is a positive correlation, as a matter of fact, because the contribution of the agriculture in the GDP, the share of agriculture growth in the GDP is fairly high. And therefore, agriculture does make a lot of difference. And it also takes care of the larger number of the people who are the inhabitants of India. And therefore, agriculture is a very important sector of India's economy. And as around more than 70 crore people depends on agriculture and allied activities, and if the income share is going up in that sector, so it means it will fuel demand for manufactured goods also. That is also a good indication for the economy. No, indeed, undoubtedly. As a matter of fact, if we really look at historically, the 16th century industrial revolution which took place in Britain, and ever after that, the comparative history of different nations of the world clearly indicates that agriculture is a precondition for the growth of industry. As a matter of fact, for two reasons. One, it is because of the raw material which is contributed by the agriculture that the industry is fed with that raw material. And therefore, the industry would be able to produce more only if there is a cheaper food, the raw material available, and that's available from the agriculture sector. The second is, if there is a prosperity in the agriculture sector of the economy, basically in an economy which is more agrarian in nature, where 70% people are engaged in agriculture, that prosperity in agriculture would generate more demand, and therefore there would be an inclusive growth which would take place. Now that is possible, and therefore I think our focus, which we have seen, particularly in the last 3 or 4 budgets, we have seen there has been a focus on agriculture, there has been a focus on social sector, and there has also been a focus on grant of funds, loans, credits by the banks to the agriculture sector. So you want to say that the program like National Food Security Mission and agriculture development schemes started by the government, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, and a lot of credit supposed to given to the agriculture every time. So all these things are making a positive impact on the agricultural growth. As a matter of fact, the policies which have been adopted by the government in the past have certainly affected positively the agriculture growth. That's one. But at the same time, I must say, whether it is the question of credit, the issue of Kisan credit cards, whether it is a question of loans being given to students for higher studies, because a lot of loan has been taken by students from the rural areas. Therefore, that is also contributing towards that. But at the same time, there is a lot yet to be done, because our agriculture, the way it is being done, is very primitive in nature. It is not yet adopted the modern methods, the modern techniques, the modern equipments. Although there has been lots of subsidy being given to fertilizer, and the government is trying to make the fertilizer available to the people at a cheaper rate, but the research, the intensive cultivation, and India's agriculture is a golden granary for the rest of the world. It can grow almost 4 to 5 times of its productivity of what it is today. If we compare India's agriculture produce or productivity with that of Japan, we find it is almost 1/5 of that of Japan. Now that means we have the capacity. While the Japan's agriculture land is not that productive
as a matter No, of actually there are many areas in our country, particularly eastern part of the country and some central area, where still productivity is very low in majority of the crops, and Yes. for that government has to push a lot of schemes like in the last budget government announced a particular scheme for increasing the production of pulses and selected some villages Yes. to give this seed kits and fertilizer and pesticide and the proper management information also supposed to be given by the scientists to the farmer. So, but one thing tell me, Mr. Agarwal, that in the first 2 quarters, the economy grew at the rate of 8.9%. Now we are expecting 8.6%. Agriculture contributed a lot into this growth. Yes. So why the industry and the service sector is not growing too fast? Or is there a direct impact of this inflation and tight monetary policy on the growth of these two sectors? If we really look at the first 2 quarters of the Indian economy for the year 2011, we found that the economy grew, as you rightly pointed out, at a fairly satisfactory level. It's only in the 3rd quarter that things were not so comfortable. One of the reasons is the high rate of inflation, and we were thinking that the inflation would probably be brought down and be under control. The second thing is there has been some kind of liquidity crunch in the banks, and therefore that also has affected the supply of funds to the industry. They got constrained because of that. The quantity of NPAs have gone up, and also the exposure of the banks to the real estate as well as in the stock market has also gone beyond, by and large, beyond the permissible level. That has also created some kind of liquidity in the banking, which affected the industrial growth in the country. And at times what happens is that we find that there is a scenario where we talk about scams. We talk about that there is some problem which has arisen here and there, like 2G scam for instance. Now naturally the industrialists as well as the industry become a little more apprehensive and complacent. There is a kind of uncertainty. What is likely to happen tomorrow? And those who have made investment in those areas, they become more cautious in expanding this thing. But at the same time, we find that there is a lot of growth in the automobile sector of the economy and other sectors of the economy. And in this quarter, I think growth is likely to be faster. But due to the higher rate of inflation, even continuously RBI is raising this policy rates of repo rate and reverse repo rate, and already crude prices has touched $100 per barrel, and general inflation is more than 8% right now. Food inflation is around 17%. Despite the good performance from the agriculture, do you see that there will be another type policy maybe maintained by RBI? Because even RBI has increased the annual rate of inflation level from 5.5% to 7% in the last review of the monetary policy. So do you see that another increase is coming in the interest rate and an impact on the overall economic growth? I feel inflation is a very important priority of the government as well as of the Reserve Bank of India. No political party in power can afford inflation, particularly of food grains, etc., to be prevailing at 17.4% or above 15% as a matter of fact. And therefore, they would, of their own, try to do their best to ensure that it is brought down. And in order to do that, naturally there has got to be a coordination between economic policies, monetary policies, as well as fiscal policies. Like for instance, the Prime Minister has also rightly pointed out that some of the duties like octroi, etc., need to be brought down. At the same time, the inflation has also been a result of the crude prices internationally. That's because we are a large importer of crude oil from internationally. The Egypt's aspect also has affected the crude prices. So we can say that in the given circumstances, our growth is really reasonable and acceptable and satisfactory, you can say. And this is the agriculture sector which has fueled the growth this time, and it is good for the overall economy and the common man of this country, because a lot of population depends on agriculture, and this growth in agriculture will also have a positive impact on the inflation and the impact on GDP also. So thanks for joining. You were listening to a dialogue on better performance of agriculture and allied activities in GDP. The participants were Professor J.D. Agarwal, economist, and Harbir Singh, economic journalist. It came to you in the program News Analysis, produced and presented by the News Services Division of All India Radio. This program is also available on our website newsonair.nic.in. You may email your opinion about this program at talksensd@air.org.in.
ये आकाशवाणी है। सामयिकी में प्रस्तुत है अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के योगदान में बढ़ोतरी। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर JD अग्रवाल और बिजनेस भास्कर के आर्थिक संपादक हरवीर सिंह। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद GDP के पहले आरंभिक अनुमान जारी कर दिए हैं और उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में GDP की विकास दर 8.6% रहने का अनुमान है। इस 8.6% की ऊंची विकास दर के पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है कृषि क्षेत्र और उसके सहयोगी क्षेत्रों का, जिनसे हमें 5.4% की ऊंची विकास दर मिली है, जबकि पिछले साल इस क्षेत्र से करीब 0.4% की विकास दर मिली थी। औद्योगिक उत्पादन में भी करीब 0.8% की दर से वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र 10% से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर और जो उसके सहयोगी क्षेत्र हैं उनसे जो विकास दर आई है उसको काफी अहम माना जा रहा है। प्रोफेसर अग्रवाल, आपको क्या लगता है कि ये जो आंकड़े आज आए हैं, जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने जारी किए हैं, वो संतोषजनक है? और कृषि क्षेत्र से जो आंकड़े आए हैं वो कितने उत्साहजनक है? ये आंकड़े, पहली तो बात यह है कि बहुत ही ज्यादा संतोषजनक है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ऐसे लगने लगा था जैसे कि हमारी ग्रोथ रेट, GDP की ग्रोथ रेट और इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट काफी खराब होने वाली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने एस्टिमेट्स के हिसाब से और प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हिसाब से ऐसी उम्मीद की जाती थी कि शायद GDP की ग्रोथ रेट 8 से 8.5% के बीच में होगी। अगर हम 8.6% हमारा एडवांस एस्टिमेट है तो ये एक संतुष्टि की बात है। दूसरी चीज ये है कि एग्रीकल्चर, जिसके अंदर 70% लोग भारत के एंगेज्ड हैं, और वैसे देखा जाए तो 80 से 90% लोग किसी न किसी प्रकार से एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, तो उसमें जो ग्रोथ रेट 5.4% आई है वो एक बहुत ही संतोषजनक है, क्योंकि 0.4% से ऐसा लगता था जैसे कि हमारा जो कृषि है और कृषि में लगे हुए लोग हैं उनकी जो जिंदगी है वो चरमरा जाएगी। तो इससे कुछ ऐसी शांति मिलने की बात है कि उनका शायद जीवन स्तर थोड़ा सा ठीक होगा। वित्त मंत्री ने भी आज कहा कि जो आंकड़े हैं संतोषजनक हैं, क्योंकि जो महंगाई की स्थिति है उसको देखते हुए और जिस तरह की नीति महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक को अपनानी पड़ी, सरकार ने कदम उठाए, उसमें लग रहा था कि कहीं न कहीं जो GDP की विकास दर है उसके ऊपर इसका असर आएगा। लेकिन जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, देखिए उसमें जो कपास है, गन्ना है या तिलहन है, इस तरह के उत्पादों में अच्छी विकास दर आई है। जो फल सब्जियां उनमें भी आई है। आपको लगता है कि ये जो कृषि क्षेत्र की बेहतर विकास दर है वो महंगाई दर के ऊपर असर आएगा इसका? क्योंकि अभी जो ताजा आंकड़े हैं खाद्य महंगाई दर के वो करीब 17% से ज्यादा है, और जो दिसंबर का आंकड़ा महंगाई दर का है सामान्य का मासिक, वो भी 8% से ज्यादा है। तो क्या हमें ये जो कृषि क्षेत्र की बेहतर स्थिति है उसका हमें महंगाई को काबू करने में कुछ मदद मिलेगी, इससे उस पर असर दिखेगा? मैं ये समझता हूं कि एक किसान के सामने एक प्रश्न उठता है कि वो कैश क्रॉप उगाए या ऐसे क्रॉप्स उगाए जो कि कैश क्रॉप नहीं कहे जाते। तो उसमें वो कोशिश यही करता है कि उसको किस प्रकार से अधिक प्रॉफिट हो सकता है, तो वो कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट कर जाता है। दूसरी बात ये है, जब हम देखते हैं कि फूड ग्रेन्स की रेट जो है, मुद्रास्फीति की दर फूड प्राइसेस के लिए 17.4% है, उससे हमारी जो ग्रोथ रेट है अफेक्ट होती है। इसी तरीके से 8% से ऊपर इन्फ्लेशन रेट होने से भी, मुद्रास्फीति की दर 8% से ऊपर होने से भी हमारी ग्रोथ रेट पर उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उसको किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हम एक इकोनॉमिक पॉलिसीज में, मॉनेटरी पॉलिसीज में, फिस्कल पॉलिसीज में एक समन्वय बनाएं और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स एडॉप्ट करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो कम कर पाएं। अगर हमारी कृषि में ग्रोथ रेट 5.4% है, इसका मतलब सप्लाई साइड की वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि वो जो शिफ्टिंग हो गया है कैश क्रॉप्स के ऊपर। इसका मतलब ये है कि कुछ और समस्या है। दूसरी चीज ये है कि हम ये भी देखते हैं कि अगर जो इनकम लेवल है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकम लेवल ऊपर जाने से कंजम्पशन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर गया है, वो तो ऊपर जाएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इनकम इफेक्ट ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम ऊपर जाती है वैसे वैसे इंफीरियर गुड्स की जो कंजम्पशन है डिमांड कम होती है। और दूसरी चीज ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, कॉमन मैन है, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके इनकम में इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ जितना कि रिच मैन की इनकम में इजाफा हुआ है ग्रोथ रेट की वजह से। जैसे एग्रीकल्चर ने एक अच्छी ग्रोथ वहां से आई है 5.4% की, तो एक तो ये है कि जो लगातार हमारे जो GDP में एग्रीकल्चर की जो हिस्सेदारी थी वो घट रही थी, उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरे, वहां अगर ग्रोथ ज्यादा है तो नेचुरली उन लोगों के हाथ में जो है उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है, और जो लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं पर वो एक बहुत बड़ा बाजार भी है, और जो मैन्युफैक्चर गुड्स
गुड्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, भले ही प्लांट मशीनरी भी खासतौर से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं या फर्टिलाइजर हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सीड्स हैं, उनके लिए मांग पैदा करते हैं। अगर उनके हाथ में बेहतर आय आती है तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारे जो ओवरऑल बाकी जो इकोनॉमी के सेक्टर हैं उन पर भी गया होगा। एग्रीकल्चर तो प्री कंडीशन है और बाकी सब सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि एक एग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर जैसे भारतवर्ष की इकोनॉमी है जिसमें 70% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं, इंडस्ट्री का दारोमदार उसके ऊपर है, सर्विसेज का दारोमदार उसके ऊपर है। अगर उसमें प्रोस्पेरिटी होती है, रॉ मटेरियल वो प्रोड्यूस करता है इंडस्ट्री को फीड करने के लिए, अगर उसमें प्रोस्पेरिटी होती है वो सर्विसेज ज्यादा प्रयोग करेगा और वो इंडस्ट्री का जो प्रोड्यूस है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, वो भी ज्यादा प्रयोग करेगा। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि हम एग्रीकल्चर को ग्रोथ करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी जो 8.8% आकर के रह गई है, हमें ये आशा थी कि ये शायद 10% से ऊपर की रहेगी। अगर ऐसा होता तो हमारे लिए और भी ज्यादा प्रसन्नता या संतुष्टि की बात होती, वो नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि शायद सरकार के लिए एक तरीके का कॉशन है कि वो जो फाइनेंशियल पैकेज इंडस्ट्री को दिया हुआ था उसको या तो विड्रॉ ना करे, अगर विड्रॉ करे तो कम मात्रा में विड्रॉ करे ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ मेंटेन करके रखी जा सके। देखिए, जो पहली 2 तिमाही थी चालू वित्त वर्ष की, उसमें हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 8.9% के करीब मेंटेन रहा था, और अभी जो हम ओवरऑल कह रहे हैं कि वो 8.6% पर आ जाएगा। तो असल में महंगाई को काबू में करने के लिए लगातार एक जो सख्त मौद्रिक नीति हम लोग अपनाते रहे, हम लोग जो रेपो रेट जो है ब्याज दरें जो प्रमुख है उनको बढ़ाते रहे हैं, और उसका असर सिर्फ ये था कि थोड़ा स्क्वीज करें हम मनी सप्लाई को, क्रेडिट के फ्लो को कम कर दें। तो उसका इम्पैक्ट कुछ दिख रहा है क्या? मैं समझता हूं कि सरकार के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महंगाई को नियंत्रण में रखा जाए, और वो कोशिश भी कर रही है। और ये मैंने जैसे कि कहा कि आर्थिक नीतियों में, फिस्कल पॉलिसी की नीतियों में, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में, मॉनेटरी पॉलिसीज में समन्वय बना करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो बैंक हैं इस समय, उसमें कुछ ऐसा देखने में आया है कि पिछले जो प्रॉफिट उन्होंने डिक्लेयर किया है वो बहुत अधिक मात्रा में डिक्लेयर किया है, 30%, 40%, 50% का प्रॉफिट। इसका अर्थ ये है कि वो जो लोन दे रहे हैं वो हायर रेट पर दे रहे हैं और जो डिपॉजिट्स ले रहे हैं वो कम रेट पर दे रहे हैं। जो गैप है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो कॉस्ट है कंप्यूटराइजेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो गई है, और इसलिए लोगों को इंसेंटिव दिया जाए कि अधिक से अधिक इंटरेस्ट रेट उनके डिपॉजिट्स पर दिए जाएं, और इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को जो लोन दिए जाएं वो कम रेट्स पर दिए जाएं ताकि ग्रोथ ज्यादा हो। वैसे ये भी देखने में आया है कि पिछले कुछ बजट्स की वजह से और सरकारी पॉलिसीज की वजह से किसानों को और कृषि को काफी मात्रा में क्रेडिट दिया गया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं और काफी मात्रा में बेसिकली जैसे कि ये आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना था या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन था, उनके जरिए जो संसाधन दिए गए हैं राज्यों को किसानों की देने के लिए और जो ढांचागत सुविधाओं का विकास करने के लिए, उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम किए हैं सरकार ने, जो किसान समय पर चुका सकते हैं अपना कर्ज, उनको 2% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है। तो ये सारी चीजें जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरह से दिखाई दिया एग्रीकल्चर में। काफी बड़ा मुद्दा है वो ये है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल प्राइस का, और उसकी वजह से काफी कुछ हमारे जो इन्फ्लेशन है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर काफी कुछ फर्क पड़ता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है वो पेरिश ना हो। इसी प्रकार से ये भी देखने में आया है कि जो पीडीएस में फूड ग्रेन चाहे दिया जाता है या केरोसिन दिया जाता है, उसका दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। अभी की मौजूदा स्थिति है, और आपने जिक्र भी किया क्रूड $100 पर बैरल तक पहुंच गया है, क्योंकि महंगाई दर को काबू में रखना है, तो एक बार फिर लगता है कि आरबीआई कुछ रेट बढ़ाने की तरफ कदम उठा सकता है, तो इसका थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है ग्रोथ के ऊपर। सरकार बहुत ज्यादा इस मामले में गंभीर है कि इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रण में रखा जाए, तो आरबीआई हो सकता है 0.25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दे या 0.5 बेसिस पॉइंट बढ़ा दे। अभी जो आंकड़े आज जारी किए गए हैं, जो आरंभिक अनुमान है चालू वित्त वर्ष के विकास दर के, तो उसमें कृषि क्षेत्र का और उसके सहयोगी क्षेत्रों का बेहतर योगदान रहा है। बाकी जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस सेक्टर है, एक तरीके से रीजनेबल ग्रोथ है उसमें, और इस तरह की परिस्थितियों में 8.6% की विकास दर हासिल करना देश के लिए अच्छा है। आपने इस चर्चा में भाग लिया, धन्यवाद। सामयिकी में अभी आप सुन रहे थे अर्थव्यवस्था में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के योगदान में बढ़ोतरी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विशेषज्ञ प्रोफेसर जेडी अग्रवाल और बिजनेस भास्कर के आर्थिक संपादक हरवीर सिंह। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है talkshnsd@aol.in।
news.air.org.in। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in।